So we discussed about the functions of the spinal cord. So I'll just repeat it once again. Are you able to see my screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So the major function is basically to transmit the information from the periphery to the brain. ठीक है, periphery is basically your outside the central nerve, मतलब spinal cord और brain के अलावा जो parts हैं हमारी body के, वहाँ से sensory information लिखा है. Sensory information that is basically related to your senses. Okay, whatever you are feeling, you are seeing, you are hearing, you are tasting, everything from that, what spinal cord will do, it will carry that information to the brain via the afferent nerve. तो जो afferent nerves हैं वो क्या करेंगी, sensory information को brain के पास लेके जाएंगी, और वहीं से ब्रेन से जो भी इंफॉर्मेशन होगी, जो भी डिसीजन या प्रोसेस जो भी है ब्रेन को एक्शन लेना है, वो ब्रेन क्या करेगा, इफरेंट नर्व से हमारे स्पाइनल कॉर्ड में भेजेगा, एंड फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड इट विल गो ऑन टू आवर मसल्स एंड द ग्लैंड्स. ओके, देन इट ऑल्सो प्ले अ की रोल इन रिफ्लेक्सेस. सो रिफ्लेक्सेस जो भी हमारे ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक क्विक एक्शंस होते हैं जिसमें वी डू नॉट रिक्वायर थिंकिंग. ठीक है, हमारा कॉन्शियस एफर्ट उसमें नहीं होता है, एंड इट हैपन्स वेरी quickly and automatically. For example, withdrawing your hand, blinking your eyes. So it also play a key role in reflexes. Now when I say that we are not paying conscious effort here, it means that the brain the role of brain here gets nullified. ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेन का कोई पार्ट नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड का ही पार्ट होता है. ठीक है, एज एन हियर वी सी दैट इंफॉर्मेशन जो है एक स्टिमुलस से एफरेंट नर्व से हम लोग यहाँ पे जाते हैं. ठीक है, एंड देन इंटरन्यूरॉन इसके बीच में एक्ट करता है, एंड फ्रॉम इंटरन्यूरॉन वट एवर द डिसीजन स्पाइनल कॉर्ड टेक्स, इट गोज फ्रॉम द इफरेंट नर्व टू द मसल और द इफेक्टर ऑर्गन, एंड देन इट विल टेक द डिजायर्ड एक्शन. ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेन का रोल नहीं होता है, सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड का रोल होता है. तो ये जो 3 फंक्शन है, दीज आर द बेसिक 3 फंक्शंस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. नेक्स्ट वी वर डिस्कसिंग अबाउट द डॉर्सल एंड द वेंट्रल पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. सो एज यू नो द ग्रे बटरफ्लाई, अगर हम वो ग्रे बटरफ्लाई को बीच से क्रॉस सेक्शनली हम अगर कट कर देते हैं, सो वी गेट 2 हॉर्न्स. ओके, वन इज द डॉर्सल हॉर्न, दिस वन, another is the ventral horn. ठीक है, तो डॉर्सल इज रिस्पॉन्सिबल, डॉर्सल ऑफ द पोस्टीरियर यानी टुवर्ड्स द बैक, पीछे वाला जो हाफ है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल आवर सेंसरी इन्फॉर्मेशन, वेर एज द आगे वाला फ्रंट पार्ट जो है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल आवर मोटर फंक्शंस. नाउ वी विल डिस्कस दीज 2 हॉर्न्स इन डिटेल. ठीक है, सो दिस इज द डॉर्सल हॉर्न, दिस पार्ट only the first half. Okay, so this is basically the dorsal horn. The spinal nerve is basically the nerves of the peripheral nervous system. ठीक है, तो these are not the nerves of the central nervous system, these are the nerves of the peripheral nervous system. तो ये हम spinal nerves को भी एक बार पढ़ेंगे when we'll discuss the peripheral nervous system. तो so far अभी इसको ये ध्यान रखना that this nerve is basically a part of the peripheral nervous system. ठीक है, because it's located outside your spinal cord, outside your brain. ठीक है, तो it's a part of peripheral nervous system. So it will go to the root ganglion. This spinal nerve is connected to the root ganglion. If anyone remember what exactly is ganglion is, किसी को याद है, कल हमने डिस्कस किया था. Ma'am, group of nerves outside the CNS. एग्जैक्टली, सो आउटसाइड द CNS जो भी ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं उनको हम गैंग्लियन कहते हैं. तो ये डॉर्सल रूट के गैंग्लियन है, यानी कि डॉर्सल रूट के जो भी न्यूरॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे. ठीक है, तो इट इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल नर्व, डॉर्सल रूट गैंग्लियन, एंड देन डॉर्सल रूट एक बेसिकली एक जैसे ट्री की रूट्स होती हैं उसी तरीके से रूट होगी, एंड देन इट गेट्स डिवाइडेड इनटू सेवरल अदर रूट जिसको हम डॉर्सल रूटलेट्स कहते हैं, एंड दे आर कनेक्टेड टू द फर्स्ट हाफ ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, एंड ऑल दिस इज related to your sensory information, everything related to your sensory information. So in the dorsal horn there are sensory relays for pain. So anything related to your pain, anything you feel, gross touch is basically the touch of your whole body, temperature and visceral sensation. Visceral sensations are basically the sensations inside your body. For example, if you eat too much then you feel nauseatic. ठीक है, nauseous feel करते हैं हम, उल्टी जैसा फील होने लग जाता है, कभी कभी you feel bloated feel करते हैं. तो ये सब क्या चीज होती है, ये visceral sensation, like inside the body it's happening. So all these things are related to your sensory information and it happens in the dorsal part of your spinal cord.
Coming to the ventral horn is this नीचे वाला part, नीचे वाला horn. Again, spinal nerve it get divided into two parts. One is the dorsal root, another is the ventral root. तो ventral root क्या करेगी? Then it again divides into rootlets and it's connected to the ventral horn. Just a second. Okay, so the ventral horn, there are motor neurons which innervates the muscles of the body. So as I said that because it's gray in color, a lot of neurons are present inside, and these neurons are what? Motor neurons, and these are responsible for the movement of your body. So all the muscles, all the muscles of the body or the glands of the body, उनके movement के लिए basically क्या है? Ventral horn is responsible. ठीक है? Clear? इसमें कोई डाउट डॉर्सल हॉर्न और वेंट्रल हॉर्न में? Dorsal is responsible for all your sensory information, first half of the spinal cord, then second half is basically responsible for all your motor functions. Now I just want anyone from spinal cord wale group to come and explain the structure of the spinal cord once again. Anyone present here? Ramsha, Hajra, Ira, Miriba, Aisha, Zainab, Deepika, Umay, कोई present है? So just briefly explain what are the structure of the spinal cord. Yes, ma'am. हाँ. And so basically, ma'am, there are 5 parts. Exactly. Which are divided like the neck portion is the cervical region, the cervical vertebra, and ma'am it has 7 cervical vertebrae, ma'am, which starts from C1 to C7. And ma'am, the C1 is called as the atlas, which holds the skull. And the C2 is called as the axis, which helps in turning and tilting of our head. And ma'am, due to these 2 vertebrae, we are able to nod our head. And the second region is the thoracic vertebra, the mid portion of the spinal cord, and there are 12 thoracic spines, and they are connected to our rib cage from the back side. And the third part is the lumbar vertebra, which is the lower back portion of our spinal cord, and it has 5 bones, 5 vertebrae. And its main function is to support the cervical and thoracic spines. And fourth is the sacrum, and it's the it's just under the lumbar spine, and it has a triangular shaped bone, huge triangular shaped bone. And the fifth is the coccygeal part of coccygeal vertebra. Is the smallest. Basically, it's the tailbone, which is at the end of the spinal cord. Okay, really nice. So they have also beautifully explained in their presentation, and Hajra has summarized it. So the spinal cord is protected by the vertebral column. ठीक है, तो हमारा जो spine या backbone जिसको हम कहते हैं, और the vertebral column क्या है, वो एक bony structure है, और उसी के अंदर हमारी spinal cord present होती है. And the vertebral column is also divided into 5 sections. Similarly, उसी 5 section के according हम spinal cord को भी divide कर देते हैं. So these 5 sections are cervical, which is your neck area. ठीक है, तो ऊपर के जो पार्ट है, and as Hajra said that there are certain nerves which are coming out. So the nerves, we won't be discussing that nerves because they are a part of the peripheral nervous system. Although they are coming out of the spinal cord, but they are the part of the peripheral nervous system. तो उनको हम spinal nerves कहते हैं. That we have discussed, that we talked about here as well. So these spinal nerves, they are coming out of the spinal cord, but they are a part of the peripheral nervous system. Okay, so there are pairs of nerves which are coming out of the of every region of the spinal cord. So 8 pairs are coming out of the cervical region. ठीक है, तो यहाँ पे C1 to C8 करके nerves होती हैं, वो pairs में निकलती है, वरना यानी कि एक हर साइड में एक nerve निकलती है. जैसे यहाँ पे ये and ये दोनों एक पेयर बना रही है. ठीक है, तो इसी तरीके के 8 pairs जो हैं
वो सर्वाइकल रीजन से निकलती है, C1 to C8. Then we have thoracic region or the chest or the and the upper back. तो upper back and the chest region का जो spine है उसको हम thoracic region कहते हैं and it contains some 12 nerves. So T1 to T12 nerves जो होती हैं वो thoracic spinal cord region से निकलती है. Then we have lumbar which is responsible for your lower back. ठीक है, lower back वाली lumbar कहेंगे. Sacral is basically your pelvic region and coccygeal is your tailbone. Lumbar से there are 5 nerves coming out, 5 pair of nerves. Sacral से भी 5 pair of nerve and only 1 pair of nerve coming out of the coccygeal region. इसको coccyx भी कहते हैं, coccygeal भी कहते हैं. ठीक है. So these are the 5 different regions of the spinal cord or the vertebral column. Now there are 2 enlargements. Now what these enlargement are? So here also we see that there is a little enlargement because a lot of neurons are present. तो उस enlargement को हम ganglion भी कह सकते हैं, but हम will prefer to say the word term enlargement. So there are 2 enlargement present because a lot of neurons are present here. So these enlargement are cervical enlargement and lumbar enlargement. Now what these enlargement do? So because our body like हमारी सबसे ज़्यादा movement जो है वो हमारे आर्म्स और लेग्स की होती है. ठीक है, सो फॉर द मूवमेंट ऑफ दीज मसल्स वी रिक्वायर अ लॉट ऑफ न्यूरॉन्स. देयरफॉर अ लॉट ऑफ न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट स्पेसिफिकली इन द एरियाज वेयर योर आर्म्स एंड लेग्स आर कनेक्टेड. So cervical और thoracic के बीच में there is a cervical enlargement which connects your arm muscles and lumbar and sacral के बीच में there is an lumbar enlargement which innervates means nerve provide करना. ठीक है, lot of nerves are present here so that your arms and legs are connected to the neurons. ठीक है, तो lumbar enlargement is basically responsible for the movement of your legs. Other regions do not require as such इतना movement नहीं चाहिए होता है as compared to your arms and legs. ठीक है. Now important thing here to see is that the spinal cord is only 2/3 as long as the vertebral column. So when we are born with the same size of the vertebral column and the spinal cord. ठीक है, तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं क्या होता है, vertebral column जो है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लग जाता है. ठीक है, it grows faster than the spinal cord and only the spinal cord is able to cover only 2/3 of the vertebral column. Now if the vertebral column is approximately it's around 70 to 71 centimeter long on an average and spinal cord is only 40 to 50 centimeters. So specifically males में 45 centimeter होती है and females में 43 centimeter होती है. तो on an average it's around 40 to 50 centimeter. So 7 out of 70 only 40 centimeter is your spinal cord. 70 centimeter में से सिर्फ 40 centimeter आपका spinal cord होता है. Now what happens to the rest of the part? Because 40 सेंटीमीटर जो है वो तो lumbar region तक ही कवर हो जाता है. What happens to the sacral and the coccygeal region? Now there is a presence of a lot of fibers or nerves which are attached to the spinal cord. They are the part of the spinal cord but उनको हम as such spinal cord नहीं कहते हैं, but they are an extension of the spinal cord. So a lot of fibers and nerves are attached at the end from the lumbar region to the coccygeal region. There are a lot of fibers. तो उस region जो है तो वो पूरा vertebral column हमारा cover कर लेता है. ठीक है, so I'll just show the picture as well so you'll be able to better understand it here. So this is the cervical region, this is the ventral region. So the person is standing from the back. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये जो है ये dorsal region है और आगे वाला front वाला region जो होता है वो ventral region है. ठीक है, so this is the spinal cervical region which is basically your neck. Then thoracic region, your upper back. Lumbar region, your lower back. Sacral is basically your pelvic region and coccyx is basically your tailbone. So the spinal column, it runs from the base of the brain. So from here base of the brain to the coccyx यानी tailbone तक. ये पूरा जो है ये हमारा spinal column या vertebral column होता है and the spinal cord is basically till here till the lumbar region and after that there are fibers attached to the spinal cord. Okay, so these are the cross sections which are taken from the different levels of the spinal cord as indicated. Okay, so clear? किसी को अभी तक कोई doubt, कोई question? Just write yes or no. Give a thumbs up on the chat box, please. Structure सबको clear है? 5 regions and 2 enlargement. Okay.
Moving on, let's talk about meninges. Now, as I said, meninges are present in both the central nervous system and the peripheral nervous system. लेकिन peripheral nervous system में क्या होता है? Peripheral nervous system में 2 layers प्रेजेंट होती हैं. थर्ड, एरेक्नॉइड मेम्ब्रेन जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है. नाउ एरेक्नॉइड मेम्ब्रेन की वजह से क्या होता है? एरेक्नॉइड मेम्ब्रेन इज बेसिकली द सेंटर पार्ट ऑफ ड्यूरा मेम्ब्रेन एंड द पिया मैटर. ठीक है, तो ड्यूरा मैटर और पिया मैटर के बीच का जो एरेक्नॉइड होता है दैट इज एब्सेंट इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड बोथ दीज फ्यूज टुगेदर एंड दे कवर द nerves of the peripheral nervous system. ठीक है, तो ये तो peripheral nervous system की बात हो गई. Then in the brain we have dura mater, arachnoid, a little space in between subarachnoid space for the fluid, and then we have pia mater which is connected to the, which is like attached to the brain. Now what happens in spinal cord? Now around the brain the dura act as a protective layer which is right up against the bone. तो जैसे हमने वो वीडियो भी देखी थी meninges की, in that we saw that the bones, जो skull था उसमें क्या था, इतनी ज़्यादा proximity होती है ड्यूरा की that there were some imprints on the skull as well. ठीक है, तो स्कल के अंदर ही कुछ निशान पड़ गए थे ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ड्यूरा. ठीक है, तो ड्यूरा इतनी ज़्यादा अटैच्ड होती है राइट अप अगेंस्ट द बोन, सो देयर इज हार्डली एनी स्पेस बिटवीन द ब्रेन एंड द बोन. तो स्कल और ब्रेन के बीच में ज़्यादा स्पेस नहीं होता है, सो दे आर क्लोजली अटैच्ड टू वन अनदर. But in spinal cord the thing is different. Why? Within the spinal cord there is a lot more space and flexibility as the vertebrae bend. Now vertebral column is not a single rod. ठीक है, एक रॉड नहीं है. इट्स मेड अप ऑफ लिटिल बोन्स टुगेदर एंड दीज बोन्स दे आर वेरी फ्लेक्सिबल एंड दे आर फ्लेक्सिबल. दैट इज वाई वी आर एबल टू बेंड, वी आर एबल टू स्ट्रेच आवर सेल्फ, स्ट्रेच आवर बॉडी. तो ये जो वर्टिब्रल कॉलम है इट्स वेरी फ्लेक्सिबल इन नेचर. इट्स नॉट अ सिंगल बॉन्ड, अदरवाइज वील बी लाइक स्टैचूज. ठीक है, तो हम स्टैचू की तरह एकदम स्टिफ रहेंगे, वी वोंट बी एबल टू डू अ लॉट ऑफ मूवमेंट. ठीक है, तो बेंडिंग, स्ट्रेचिंग, ये सब मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी इफ दीज वर नॉट made up of single bones. Now what happened if these bones were attached to the dura membrane? ठीक है, तो dura membrane अगर इन bones की तरह bones पे attached होता तो क्या होता है, the movement would have been restricted. तो similarly एक rod बन जाती and एक सीधी rod बन जाती and we won't be able to perform certain functions. इसीलिए there is a lot more space between the dura mater and the bones of the vertebral column. ठीक है, so there is a lot more space between more space and flexibility as the vertebrae bends. The dura is not attached to the bones of the vertebral column because the bones move. ठीक है, तो ड्यूरा जो है इट्स नॉट अटैच टू द बोन्स बट इट इज अटैच टू द स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड से तो अटैच्ड है ही, बट द स्पाइनल कॉर्ड एंड द ड्यूरा मैटर आर नॉट अटैच टू द बोन्स बिकॉज बोन्स को क्या चाहिए, अ लॉट मोर स्पेस सो दैट द मूवमेंट हैपन्स. अगर स्पेस नहीं होगा तो मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी, वी वोंट बी एबल टू परफॉर्म एज मेनी फंक्शंस एज वी कैन विदाउट द स्पेस एंड द फ्लेक्सिबिलिटी. क्लियर? एनी डाउट्स? Okay, next this is the structure. So here also arachnoid membrane is present, dura mater the outer one, arachnoid and the pia membrane which is attached to the spinal cord. Similar fashion as in the brain. तो जैसे brain में pia mater जो है वो attached होती है, इसी तरीके से spine में भी, spinal cord में भी pia mater attached होती है and there is a little space here which is for the cerebrospinal fluid. तो जो cerebrospinal fluid है it's present all in the central nervous system, तो spinal cord में भी present होता है and this little space here it consists of the cerebrospinal fluid. Now the grey matter is in the center of the spinal cord, contains interneurons and motor neurons that send axons to the muscle. So this we have discussed that ये ग्रे कलर की बटरफ्लाई बीच में क्यों है, बिकॉज अ लॉट ऑफ इंटरन्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट. ठीक है, उनकी सेल बॉडीज आर इनसाइड दिस ग्रे बटरफ्लाई विच मेक्स द कलर डार्कर. तो है इट इज कॉल्ड द ग्रे मैटर एंड उन्हीं के एक्सॉन्स एंड नर्व्स आर प्रेजेंट ऑन द आउटसाइड जो मैसेजेस लेके जा रहे हैं. ठीक है, सो दीज एक्सॉन्स दे आर सेंडिंग दीज एक्सॉन्स टू द मसल्स. तो मैसेज कहाँ जा रहा है, मसल्स के पास जा रहा है, देयरफॉर दे आर प्रेजेंट ऑन द आउटसाइड. ठीक है, सो ऑल द प्रोसेसिंग, ऑल द इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन इज बेसिकली हैपनिंग इनसाइड एंड यहाँ से जो एक्सॉन्स हैं वो इनके एक्सॉन्स जो है वो बाहर की तरफ निकले हुए हैं एंड एक्सॉन से ये हमारी रेस्ट ऑफ द बॉडी पर जाते हैं. ठीक है, नाउ व्हाई दिस इज वाइट इन कलर, एनीवन?
वाइट कलर का क्यों है ये? वाइट मैटर क्यों होता है? तुषार, you're not audible. Ma'am, due to axons and nerves. Yes, because of nerves in the axons and they are myelinated, यानी उनके आगे जो है myelin sheath covered है, and myelin sheath is basically your fat or the lipids, and they are white in color, therefore they give white color to the white matter. ठीक है, clear? Then these are the ventral roots or the motor roots and dorsal or the sensory roots. ठीक है. Now here is the zoomed in version of the spinal, this thoracic का थोड़ा सा part है. तो spinal nerves are the peripheral nerves का thing. Then pia mater, arachnoid and the dura mater. So this is the pia mater, arachnoid mater and the dura mater, and then it is covered with the vertebral column. So there's a lot more space between the dura mater and the vertebral column. क्यों? क्योंकि we need to move, we need to have flexibility, we need to stretch our body, we need to bend our body. So उसके लिए हमें थोड़ा सा space चाहिए. Therefore a lot more space is there as compared to the brain and skull and dura mater का जो था. ठीक है, skull और dura mater में जितना space था उससे हमें कई ज़्यादा space यहाँ चाहिए. ठीक है, okay. So now there are so just type the answer in the chat box. There are dash regions and dash enlargement within the spinal cord. Just write the answer A, B, C, D, E. Okay. So Muzna, can you please tell me what are the enlargements here? कौन सी enlargements हैं? Muzna, are you there? Asma? Asma, are you there? Just write. If you're not able to speak, you can just write here. What are the enlargements here we are talking about? What are the names of the enlargements? Cervical enlargement and lumbar. Cervical is responsible for your cervical enlargement is responsible for your arms. Exactly. And lumbar is basically, Muzna, we are talking about enlargements. You're not talking about regions अभी, तो इसलिए neck नहीं होगा, यहाँ पे arms होगा. ठीक है, so cervical enlargement is basically for your arms, lumbar enlargement is basically for your legs. ठीक है, and what are the 5 regions? Ariba? Ma'am, cervical, thoracic, then lumbar, sacral and coccygeal. Exactly. ठीक है, तो ये सारी जो हैं ये हमारे 5 regions हो गए and 2 enlargements. So D is the correct answer here. Okay, next, what is the correct sequence of the meningeal layers covering the spinal cord from the outward to the inward? Outward से लेके inward तक हमारी meningeal layers कैसी होती हैं, क्या sequence है? Okay, C. Okay, all right. So C is the answer. Dura, then arachnoid, and innermost is the pia mater. Okay, simplest one. Now, match the following. So you have to match the regions with the corresponding organ or the region of the body. Okay, the spinal cord ke region and then regions of the body. You have to match them. So Hajra says A, Iram says D. Okay, I'm waiting for a few more. Thoracic को किसके साथ मैच करेंगे इनमें से? Then you will select the answer. ठीक है,
Okay, Zainab say D. Aman says D. So Hajra, it's not A, it's D. ठीक है. हाँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे thoracic region है. Thoracic is basically your mid back. ठीक है. Coccygeal is your tailbone. That is B. 1 का D हो गया mid back, 2 का B हो गया tailbone. Cervical is your neck, यानी 3 का A. Sacral is your pelvic region. That is 4 का C. And lumbar is your lower back. That is E. ठीक है. तो इस तरीके से मैचिंग होगी. ऑलराइट, किसी को अभी तक कोई डाउट? द रीजन्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड दीज आर द रीजन्स ऑफ योर बॉडी. तो कहाँ पे कौन से स्पाइनल कॉर्ड का रीजन होगा, ये यहाँ पर है. ठीक है. Okay, moving on, let's talk about spinal cord injury. So anyone from group 1 will just tell in briefly what exactly are the types of injuries. Anyone from group 2, I guess. हाँ, spinal cord से. Ma'am, so there were classifications based on various categories. So based on the cause of the injury, there was traumatic or non-traumatic. Exactly. And then based on the region of the injury, there was all those 5 types of injuries: thoracic, lumbar, sacral, cervical, and coccygeal. And then there was one more, which was complete and incomplete injuries. So these were the 3. Complete is when there is complete loss of sensory and motor function, and incomplete is when there is some remain of sensory and motor function left. Okay, all right, very good. So in the past we have already, like, this group has beautifully explained the types of injuries, and they have also given you a case study as well. Okay, so I'll just briefly, as Zainab also explained. So basically क्या होता है, हमारी जो spinal cord injury है 2 टाइप की हो गई. One is external, यानी due to the force of the external environment. तो बाहर से अगर कुछ force आ रहा है हमारी body में, so that is your external or the traumatic injury. Another is the internal injury, which is happening बिकॉज ऑफ द इनसाइड मैकेनिज्म ऑफ योर बॉडी. तो कोई इन्फेक्शन हो गया, या फिर कोई ब्लड का क्लॉटिंग हो गई, या कोई ट्यूमर आ गया, कोई कैंसर आ गया. सो ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग इनसाइड योर बॉडी, देयरफॉर दे आर कॉल्ड नॉन ट्रोमैटिक or internal injuries. Okay, then as Zainab said, then according to the region, तो जिस region में भी injury होगी वो हम उस region की injury हम कहते हैं. ठीक है. अगर cervical injury हो गई, cervical region में injury हो गई तो cervical spinal cord injury, coccygeal में हो गई तो coccygeal spinal cord injury. ठीक है. Now one thing to notice here is that the higher the injury, द मोर द डिसफंक्शन. तो जितनी हाई इंजरी होगी, मतलब जितनी हाई रीजन पे इंजरी होगी, उतना आपका लॉस होगा, लॉस ऑफ मूवमेंट होगा रेस्ट ऑफ द बॉडी का. ठीक है. अगर सपोज सर्वाइकल रीजन में अगर इंजरी हो जाती है तो दैट मीन्स योर होल बॉडी गेट्स अफेक्टेड. ठीक है. तो योर होल बॉडी गेट्स ईदर पैरालाइज्ड और लॉस ऑफ मूवमेंट और एनीथिंग लाइक दैट. बट अगर कॉक्सिजियल में होगी तो कॉक्सिजियल इज लेस डेंजरस एज कम्पेयर टू द सर्वाइकल, बिकॉज इन दैट यू आर नॉट एबल टू मूव योर अपर एक्सट्रीमिटीज एंड द लोअर, यानी कि ऊपर की बॉडी भी हम मूव नहीं कर पाते, लोअर बॉडी भी नहीं मूव कर पाते. लेकिन कॉक्सिजियल में होगी तो फिर कॉक्सिजियल में हम लोग वी कैन नॉट मूव द लोअर पार्ट ऑफ अवर बॉडी. ठीक है. वी कैन स्टिल यूज आवर upper body, upper hands and everything, hands and upper extremities, we can use that, but we cannot use our lower body or the lower extremities. ठीक है. So the higher the injury, the more the dysfunction. Then so we won't be discussing the spinal cord injury. I'll be only focusing on the rehabilitation part. ठीक है. तो what happens once your operation is done, once the treatment is being, hospital period जो है वो complete हो गया. Now the patient needs to come back to home. Now what happens then? So I'll be discussing that. So I have found this paper, 2015 का paper. It's on rehabilitation of the spinal cord injury. I'll be sharing that on the Google Docs as Google Classroom as well. So you can go through that paper. So spinal cord injury is the injury of the spinal cord from the foramen magnum to the chorda equina, which occurs as a result of compulsion, incision or contusion. Now here we have some words like spinal cord injury is the injury of the spinal cord. Clear? इतना सबको clear है? Spinal cord क्या होगी injury? जो spinal cord की spinal cord injury is basically हमारी spinal cord जो है वो injured हो रही है. From the foramen magnum to the chorda equina. Now what exactly foramen magnum is? Foramen magnum, now हमारा जो brain है it's covered with the skull. ठीक है. And brain and spinal cord are connected. Now skull में there is a little opening, there is a little hole from which the spinal cord passes. ठीक है. तो स्कल जो है
ब्रेन जो है इट्स कवर्ड विद स्कल एंड ब्रेन इज कनेक्टेड टू द स्पाइनल कॉर्ड. स्कल में ही एक छोटी सी ओपनिंग होती है जिसके थ्रू स्पाइनल कॉर्ड पास करती है. नाउ दैट ओपनिंग इज बेसिकली कॉल्ड योर फोराmen magnum. So the spinal cord injury can occur from the foramen magnum, like right from the base of your brain to the cauda equina. Now cauda equina is basically, as I told you, that spinal cord जो है वो हमारी सिर्फ 2/3 होती है. Rest are the nerve cells, the nerves and the fibers attached to the spinal cord, basically the extensions of the spinal cord. Now those extensions, they are in the shape of horse tail. So basically cauda equina is the Latin for the horse tail. So इसीलिए इसको हम बोलते हैं cauda equina. So till the end, from the base of your brain till the end, like from the foramen magnum to the cauda equina, अगर कोई इंजरी होती है तो उसको हम स्पाइनल कॉर्ड इंजरी कहते हैं. नाउ इट कुड बी एज अ रिजल्ट ऑफ कंपल्शन, यानी द यूज ऑफ फोर्स, incision, any cuts or bruises, any cuts or opening, or it could be contusion, any bruise, injury, or if your blood vessels get damaged. So it's basically that. So compulsion यानी कोई भी force के use से force या violence कुछ भी होता है उससे result होता है. Incision basically any opening or the cut, and contusion is basically any blood vessel या फिर bruises ब्रूसेस पड़ जाना स्पाइनल कॉर्ड पे. तो दैट इज बेसिकली द रिजल्ट ऑफ योर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी. Now, as a result of the injury, the function performed by the spinal cord are interrupted at distal level of the injury. So, as I said, जितनी ऊपर इंजरी होगी उतने parts affected होंगे. So, the distal the injury, the more is the dysfunction, the more is the damage to your body. ठीक है. Now, SCI causes serious disability among patients every year. So these are the some stats which the authors have quoted in their paper. So you can go through that. Every study has a link attached to it. So if you have any doubts, you can just click on that link and you can go through the research study which they quoted. ठीक है. तो every year about 40 million people, यानी कि 4 करोड़ लोग जो हैं world wide, they suffer from SCI. ठीक है. Every year 4 करोड़ लोग worldwide they suffer from the SCI, and most of them are young men. So they might have conducted several studies, they might have seen the statistics, and they concluded that most of them are young men, typically from the age of 20 to 35, and 1% of this population are children. So 1% जो population है वो children है. Out of this 40 million, 1% जो है वो children है. Children में most common injury क्या है? Most common is basically motor vehicle accidents. These are the most common mechanisms of the injury. Then once the children go to school, they start to go to school, they start to participate in several organized group activities. So the another cause is basically your sports related injury. ठीक है. So they are responsible for the largest number of spinal cord injuries after children begin school and start practicing in the organized sport. So once they go into school, they start participating in these organized group activities and sports. So sports related injury becomes the major cause of spinal cord injuries. Then among all sport, football causes the great number of injuries. So most number of injuries जो है sports में कहाँ होती है? Football में. And 60 to 80% of the spinal cord injuries in children occur in the cervical region. So mostly जो region जो है वो Okay, I'll just wrap up. I'll just complete this and then I'll wrap. ठीक है. So then I'll continue with this in the later class. Okay, tomorrow. So just give me 2 minutes. So the more जो मोस्टली जो इंजरीज हैं वो हमारी कहाँ है? फुटबॉल में होती हैं. एंड 60 to 80% ऑफ दिस इंजरीज अकर इन द सर्वाइकल रीजन. सो मोस्टली जो 80 to 60% जो रीजन है, जो इंजरीज हैं वो सर्वाइकल यानी नेक रीजन में इंजरीज होती हैं. एंड द रिमेनिंग आर इवनली स्प्लिट बिटवीन थोरासिस एंड द लंबर रीजन. एंड बॉयज आर मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस स्पाइनल ट्रॉमा देन गर्ल्स. सो बॉयज में जो है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी इज मोर कॉमन. And the most common causes of the SCI in the world are, so this we were talking about children, now we'll talk in the general sense. The most common causes are traffic accident, gunshot injuries, knife injuries, falls, sport injuries, and sports में कौन सी है? Diving is like the most common sport injury. ठीक है. So this and I'll be covering the rehabilitation tomorrow. So I think you guys have class. I was under the impression that you guys have a class at 12 o'clock. So इसीलिए okay. So I'll just take the attendance. कोई नहीं. So we'll cover that tomorrow. Rehabilitation वाला part. Again, I'll upload the paper. You can just go through that as well. Aisha Ehsan, Ain Fatima, Ma'am.
Ain present? Yes, ma'am. Okay. Aditya Mishra? Aditya Chaudhary? Aditya Vora? Aisha Siddiqui? Yes, ma'am. Akanksha?